Namah Vishnupada Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnupada Vishwapastaya Bhutale Srimati Srimate Bhakti Vedanta Swami Krishnamuni Namaste Saraswati Devi Gauravan Prachari Nirvishesha Jnavadi Vachata Vishatari Namaste Saraswati Saraswati Gauravani Prachadini Devi Nirvishesha Shunavadi Vachata Satyavachatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaur Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gopatvrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaur Jai Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda Shri Advaita Nityananda Gadadhar Srivasati Bhaktavrinda Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama. Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari, Nitai Gaura Hari Bo, Om Hari Om, Hari Hari Bo, Om, Hari Harinam Sankirtan ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. So we are meeting after a very long time. So I thought we'll do some revision. And Ritesh Ruchika is here. Ritesh Prabhu is here, yes. तो रितेश प्रभु हमने सोचा कि कुछ रिवीजन कर लें. बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, है कि नहीं? सडनली मैं 7 चैप्टर पे कूद जाऊंगा तो फिर अ, बाकी का बेस लाइन तो होना चाहिए. व्हाट डू यू से? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. स्पॉट टेस्ट. ठीक है. एक बार ये मोबाइल में कॉल आ रहा है इमरजेंसी से. So, basic things on the Bhagavad Gita. How many chapters in the Bhagavad Gita? 18 chapters. Very good. How many shlokas in the Bhagavad Gita? 700 shlokas in the Bhagavad Gita. So, Bhagavad Gita was spoken by whom to whom? Krishna to Arjuna. Lord Krishna to Arjuna. So, uh, Bhagavad Gita is called, is one of the foremost Upanishad, Puran, Shastra. What Shastra is it? Bhagavad Gita is Gita Upanishad. It is one of the foremost Upanishads, right? ठीक है ना? PC, 1 second. I'll just get back. One emergency here. I'll get back. Upanishad, right? How many Upanishads are there? We have we have 108 Upanishads. And how many Puranas are there? We have 18 Puranas, right? So in Vaishnav tradition, we 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 are looking at one Upanishad, that is Gita Upanishad, and one Purana. Which Purana are we reading? Which Puran? कौन से पुराण को हम पढ़ते हैं? भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम, Bhagavatam. right? So Vedic Shastra, when we look at Vedic Shastras, Vedic Shastros में से, what are we looking at? We are looking at one Upanishad, that is Gita Upanishad, and one Puran, that is Bhagavad Puran, right? So why are we focusing on one Upanishad only? Why do we focus on one Upanishad? Why are we focusing on one Upanishad? What are the Upanishads? When we say Gita is an Upanishad, what are the Upanishads? उपनिषद क्या है और पुराण क्या है? बेसिक क्वेश्चन.
ओके, हम जब वैदिक शास्त्र बोलते हैं तो वैदिक शास्त्र को कैसे डिवाइड किया जाता है? ओके, बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। वेदों को जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वो चार वेद में दिए। चार वेद, एक्चुअली चार वेद भी नहीं थे, एक ही वेद था। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को दिया तो एक ही वेद था। इट वॉज द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया, उसको वेद बोलते हैं। जब वेद व्यास ने उस वेद को पढ़ा तो वो जान गए कि मनुष्य इस वेद को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने उसको, उसका विभाजन किया, ही डिवाइडेड इट। इसीलिए वेद व्यास, व्यास मतलब जो डिवाइड करते हैं। तो व्यास मुनि का नाम वेद व्यास क्यों है? क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया, डिवाइड कर दिया, और उन्होंने अपने छात्रों को दे दिया। ही गेव इट टू स्टूडेंट्स, और उनको बोल दिया कि अभी आप बांटो, इसे मनुष्य में बांटो। फिर जब उनके शिष्यों ने ये वेदों का ज्ञान ग्रहण किया, तो उनको लगा कि ये वेदों का ज्ञान को ऐसे ही देने से भी कठिन होगा। तो वेदों के जो मुख्य, द मेन टीचिंग्स जो है, उसको छोटे छोटे टीचिंग्स में डिवाइड कर दिए, और उसको उपनिषद बनाए। So the Upanishads are nothing but collections from the Vedas that give the knowledge in a more concise and precise manner. Precision is the purpose of Upanishads. And through the ages, it is the Upanishads which have been taught by teachers uh, of various schools, gurukuls. They have taught the Upanishads to their students. Upanishad मतलब नीचे बैठ के सीखने वाला, तो गुरु से सीखने वाला उपनिषद। फिर पुराण क्या है? जब उपनिषद भी सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को बुद्धि है, वो सीख सकते हैं, लेकिन सबको वो बुद्धि नहीं है। तो उनको कैसे हम वेदों का ज्ञान दें? हाउ कैन वी गिव देम द नॉलेज ऑफ द वेदास? थ्रू हिस्ट्रीज, थ्रू हिस्ट्रीज। सो थ्रू स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज, सर्टन सर्टन डिफिकल्ट जो तत्व है, जो गुह्य तत्व है, जो कठिन तत्व है, वो स्टोरीज के माध्यम से सिखाया जाता है, और वो पुराण है, हिस्ट्रीज, स्टोरीज। तो 18 पुराण है, और ये 18 पुराण में भगवान के बारे में, सारे देवताओं के बारे में ज्ञान है। तो 18 पुराण का विभाजन कैसे किया गया है? 6 पुराण सत्वगुण में, मोड ऑफ गुडनेस, 6 पुराण रजोगुण में, मोड ऑफ पैशन, और 6 पुराण तमोगुण में, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ऐसे डिवाइड किया जाता है। ओके, तो इसमें से छह छह जो पुराण है मोड ऑफ गुडनेस में, उसमें से द टॉप मोस्ट इज श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण। भागवतम अमलम पुराणम। भागवतम इज कॉल्ड अमलम पुराणम। अमलम पुराणम मीन्स जिसमें मल नहीं है। मल का मतलब क्या है? वेस्ट। तो पुराणों में क्या वेस्ट है क्या? पुराणों में वेस्ट है, तो इनको, भागवतम को अमलम पुराणम क्यों कहा है? पुराण तो ज्ञान बांटने का माध्यम है ना। उच्च दर्जे का ज्ञान ही देते हैं वेदों में। निचले दर्जे का ज्ञान नहीं है, उच्च दर्जे का ज्ञान ही। लेकिन भागवतम को अमलम पुराणम कहा गया है, भाई। नहीं, अमल पुराणम। मल मतलब वेस्ट। हम बोलते हैं ना, मल मूत्र का त्याग करना है, स्विच करना है, दैट इज वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या पुराणों में
मल है, वेस्ट है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? ऐसे भगवान हिंदी कृष्णा में के भी. बारे में बोलते हैं इसमें। सॉरी सॉरी. भागवत में कृष्णा के बारे में पूरा बोलते भागवतम में भगवान को। कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो बाकी पुराणों में क्या बोलते हैं? इतना इम्पोर्टेंस नहीं या होगा, दैट इज, मुझे इतना पता उतना नहीं। इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. ओके. एनीबडी एल्स? यस रितेश टू, एनी अदर आइडिया? Ritesh has anything else to suggest? Hmm. Correct. That is more precise. So the Bhagavatam starts by Ved Vyas. After composing so many Shastras, Ved Vyas is still unhappy. He is unhappy. Why is he unhappy? Because after composing so much and so much of uh, texts, he feels he has not given something. He has still not completed his job. So then Narad Muni appears there, and Narad Muni says, you have done, you feel that incompleteness in your heart because you have not given the supreme knowledge, the knowledge of the absolute, the knowledge of Lord Sri Krishna. So when you give that knowledge in its most pure form, yeah, why Bhagavatam is called Amalam Puranam? Because Bhagavatam deals only and only with Krishna Tattva. There is no tinge of any other philosophy. That means any other philosophy means anything related to dharma, artha, kama, moksha. This is what we in the material world endeavor for, na? धर्म अर्थ काम मोक्ष. ये चार चीज के लिए हम मेहनत करते रहते हैं. तो इसमें से कुछ भी श्रीमद् भागवतम में नहीं मिलेगा. देयर इज नो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन श्रीमद् भागवतम. एवरीथिंग is meant only to glorify Sri Krishna, and that is why it is Amalam Puran. Whereas all other Puranas will also glorify Sri Krishna, will also glorify Mahavishnu, but it will also give you tips for धर्म अर्थ काम मोक्ष. आपको धर्म बढ़ाना है ये कर लो, आपको पैसे कमाना है ये कर लो. And because Ved Vyas had not given this ultimate knowledge, which is the source to deliverance of everybody in this material world, he was feeling incomplete. And that's when he sits down to compose the Srimad Bhagavatam. Okay, okay. Now coming back to our topic, that is Bhagavad Gita. So out of the 108 Upanishads, we have selected one Upanishad, and that is Gita Upanishad. And why is that? ऐसा क्यों है कि गीतोपनिषद को हमने सिलेक्ट किया है? देयर आर 108 उपनिषद्स. व्हाई गीतोपनिषद? व्हाई? एनी आइडिया? कृष्णा स्वयं बोल रहे, गीता यस. भगवत। गीता स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं. परफेक्ट. व्हाट अबाउट द अदर उपनिषद्स? They are not all, none of the other Upanishads are actually spoken by the Lord. They are spoken by Brahmaji, some Upanishads are spoken by Shivji, or some great Rishi like that. But why is
Gita Upanishad called Bhagavad Gita because it is the song of the Lord. भगवान स्वयं बोल रहे हैं. And the whole Mahabharat was orchestrated finally because the Lord wanted to give this knowledge. ये महाभारत का युद्ध बनाया क्यों भगवान ने? भगवान तो वैसे भी पांडवों को राजा बना सकते थे. भगवान तो वैसे ही कौरवों का बिना फाइट के ही आर्मी खत्म कर सकते थे. बट दिस होल आडंबर बोलते हैं ना. व्हाई दिस होल आडंबर? Because he wanted to package the Bhagavad Gita in such a way that everybody will hear. So ultimately, Mahabharata is actually only packaging. The actual gift that the Lord wanted to give is what? 7 Veds, 7 Veds.
करेक्ट, वेरी गुड. हाँ, तो डॉक्टर लक्ष्मी सेज कि अगर युद्ध करने के बाद भी, अगर अ, ऐसा युद्ध किया जिसमें अपने ही गुरुजन और सबको मार दिए, तो मैं नरक में जाऊंगा और मेरे पीछे बाकी लोग भी नरक में ही जाएंगे. व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि मैं गुरुजनों को मार रहा हूँ. तो आई एम आई विल लूज ऑल माई पाइटी एंड आई विल गो टू हेल्प. व्हाट इज द पर्पस? तो धर्म के माध्यम से भी गलत है, अर्थ के माध्यम से भी गलत है. हाँ, काम तो होगा ही नहीं, बिकॉज आनंद तो होगा ही नहीं. मोक्ष के हिसाब से भी गलत है. मोक्ष के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि मैं नरक में जा रहा हूँ और मेरे पीछे बाकी लोग भी नरक में जाएंगे. वेरी करेक्ट. व्हाट एल्स? और क्या है? नरक की प्राप्ति होगी. He says, I did rather beg as a beggar rather than kill people and go to hell. What is the gain? He says, this is all, whatever I am doing for selfish reason. Finally, ये सब जो हाहाकार मच जाएगा, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे राज्य चाहिए. Just for my selfish motives I am doing this. So why should I become so selfish? Rather, I should take the begging bowl and go begging on the streets of, into the forest, and rather take up sannyas. Why should I fight? Then he finally says, my mind is not working. I cannot think rationally. Oh Arjuna, my Gandhi is shaking. And who is Arjuna? Arjuna is that person who said, anybody who tells me to give up my Gandiva, I will kill him instantaneously. मतलब तत्क्षण मैं उसको मार दूंगा. अगर किसी ने मुझे बोल दिया गांडी रखने के लिए, मतलब गांडी उतारने के लिए, वो अर्जुन बोल रहे हैं कि गांडी तो मेरे हाथ से ऐसे ही निकल रहा है. इट इज जस्ट स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड्स. ओ कृष्णा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. तो एट दिस स्टेज अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन क्या बोलते हैं? शिष्यास्तेहम माम त्वाम प्रपन्ना. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. सेकेंड चैप्टर स्टार्ट्स ऑफ बाय Arjuna giving all these different reasons, and finally Arjuna ends his talk by saying, Krishna, Shishyasteham mam tvam prapanna. I am taking your shelter, mam tvam prapanna. मैं आपके शरण जा रहा हूं. और जब तक तो गुरु के शरण नहीं जाएंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता. जब तक गुरु के शरण नहीं जाएंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा. तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो पहला चीज ये है, शिष्यास्तेहम माम त्वाम प्रपन्ना. आई सरेंडर माई सेल्फ अनटू यू. नाउ यू टेल मी वॉट एवर आई एम सपोज्ड टू. Until we come to that point of surrender, knowledge will not percolate, because like energy flows from high to low, na? Electricity flows from high voltage to low voltage, like that. तो high energy to low energy. तो जब तक हम नीचे जाएंगे नहीं, ऊपर से वो ज्ञान उतरेगा नहीं. इसीलिए शिष्यास्ते हम माम तो अमरपन्ना. Unless I go down, I bow down and take shelter of Sri Guru, knowledge will not percolate. ये पक्का है, ये पक्का है. So then it is here that Krishna is known for what?
मंद मंद मुस्कान, है ना. भगवान is known for his manda muskan, sweet smile, है ना. Krishna is known for his sweet smile. So Krishna then smiles. Yes. Now the scene is ready. अब मैं ज्ञान बांट सकता हूँ. अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, ऐसे बोलते हैं. रिसीविंग मोड में आ गए. And then he starts off. And how does he start off the Bhagavad Gita? He starts off by chastising Arjuna. अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि मंद है, यू फूल. ही स्टार्ट्स ऑफ सेइंग यू फूल. ये किसको बोल रहे हैं? अर्जुन किसको फूल बोल रहे हैं? अर्जुन सॉरी कृष्णा किसको फूल बोल रहे हैं? ही इज सव्यसाची. ही कुड शूट एरोज विद बोथ हैंड्स. ही इज सच एन एक्सपर्ट. ही हैड ऑल द नॉलेज ऑफ द वेदास. ही वाज श्रुतिधर. श्रुतिधर मीन्स एक बार गुरु से सुन लिया, मेमोराइज्ड, नो सेकंड रीडिंग रिक्वायर्ड. एक बार सुन लिया, द्रोणाचार्य ने बोल दिया, कट 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 कट, पाठ हो गया, फिनिश्ड. एंड अर्जुन वाज गुडाकेश. गुडाकेश मीन्स ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑन स्लीप. अब बोला सो जा, सो जाएंगे. अब बोला उठ, उठ जाएंगे. 2 दिन तक सोना नहीं है, नहीं सोएंगे. 2 दिन तक सोते रहो, सोते रहेंगे. कंप्लीट कंट्रोल ऑन स्लीप. कैन यू इमेजिन? गुडाकेश. That is Arjun. He is the only person whom Dronacharya with qualification gave the Brahmastra. Brahmastra is not an astra, it's not a weapon, it is mantra. When a qualified person with that kind of potency would chant the mantra, the weapon would appear and do whatever that person desires. Prabhupada says a Brahmastra is 1,000 times more potent than the most powerful nuclear weapon. Because it can destroy not one earth, it can destroy universes, and at the same time it can focus on the fetus inside the womb of a mother. दोनों चीज कर सकते. That is Brahmastra, and this astra is given to a person with that kind of qualification. That is Arjuna. And Krishna, what is he telling Arjuna? You are a fool. And Krishna starts off second chapter के बीच में. How does Krishna start off? You are a fool. Why does Krishna say you are a fool? Because despite knowing all this knowledge, when he comes with a difficult situation, your intelligence gives way. And he's becoming weak. So this is sign of weakening intelligence. बुद्धि आपकी शार्प नहीं है, इसके लिए ये होता है. That is why Krishna starts off his address by saying, Arjuna, you are a fool. And then Arjuna Krishna at different levels cuts off all the questions put forth by Arjuna. He says, as a Kshatriya, what is your dharma? You stand and fight. So you are saying that you will go to hell? No, if you don't fight, you will go to hell because you are not doing your dharma. Because you are not doing your dharma. So first you do your dharma properly. To that, he cuts off that answer. He cuts off that question, saying, you perform your dharma properly. One. Second, he says, you are saying that by killing all the elders, you will incur sin. So he said, when you perform your dharma, either the opposite party will kill you or you will kill the opposite party. You are still performing your dharma. And what is the purpose of your
fighting this war. It is a dharma yuddha. It is for the purpose of establishing religion. It is not for your selfish reason. Everybody in this battlefield knows who's wrong, who's on the side of the real. Then why are you thinking like this? Then he says, you are speaking of समाज में अधर्म फैल जाएगा, because elders are not there, अधर्म फैलेगा. So what will Samaj say if you don't do your duty? The Samaj will follow you. The society will follow you and say that the great Arjun did not follow his dharma. So why should I follow my dharma? If the great Arjun did not follow dharma and became a beggar just by looking at the war field, the warriors in future also will say, no, 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 I will not fight. I will become beggar. What will happen? Automatically thieves will increase. So how can you say that dharmic samaj adharmic hoga because you are killing elders? If you don't kill, still there will be adharma. So वो भी काट देते. Then he says about happiness. He said first you perform your dharma, right? Then he goes to the point of soul. फिर वो आनंद किस लेवल पे आ सकता है? अभी तक सिर्फ धर्म के लेवल पे बोल रहे हैं, फिर वो आनंद के लेवल पे आता है. Then he comes to the point of soul. You are not this body, you are the soul. है ना? And what is that famous shloka in the second chapter? It says, you are not the body, you are the soul. Which shloka says that? Very famous shloka in the second chapter. Which shloka says that? And that is the beginning actually. That is where Krishna is beginning the teachings. बोलो बोलो श्लोका बोलो. करेक्ट. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते. What is Krishna saying? Dehinosmin yata dehe. This body keeps changing. Oh Arjuna, this body will keep changing. Don't worry about old age and this that. Kaumaram yauvanam jara. Kaumaram means young. छोटा बच्चा. फिर यौवनम means young. जरा means old. कौमारम यौवनम जरा. तथा देहांतर प्राप्त. उसके बाद दूसरा देह मिल जाएगा. धीरस तत्र मुह्यति. धीरस means one who is stable headed. धीर पुरुष. तत्र न मुह्यति will not be disturbed by this change of bodily features, because you are not body, you are the soul. So what is Krishna advising in the very next shloka? What is he advising? Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkata agama paino anityas tam stitikshasva bharata. What are you supposed to do, Arjuna? Just like seasons are changing, huh? Seasons are changing. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkata. From winter to summer, summer to rainy, seasons are changing. Like that only happiness and sorrow will keep changing. You just tolerate. When he says tolerate, what do you have to tolerate? You have to tolerate the happiness and the distress. ऐसा नहीं है कि मेरा लॉटरी लग गया तो बहुत कुछ, अरे वाह वाह लॉटरी लग गया. नो. When you आपकी जॉब में आपको सडनली राइस मिल गया तो अरे राइस मिल गया, यस. और राइस नहीं मिला तो एकदम नहीं. दोनों आपको टॉलरेट करना है. यू हैव टू टॉलरेट बोथ ऑफ इट. हैप्पीनेस ऑल्सो यू हैव टू टॉलरेट एंड डिस्ट्रेस ऑल्सो यू हैव टू टॉलरेट. हैप्पीनेस में बहुत खुश हो गए
और डिस्ट्रेस में सोच रहे हैं, both are not good for the soul, because that happiness and distress is just two sides of the coin. अभी अभी आपको सुख लग रहा है, कल आपको दुख आने ही वाला है. ताम स्थितिक्षस्व भारत, just tolerate it. That is how you go ahead. That is how you go ahead. So here Krishna is telling Arjuna clearly, you are the soul, you are not this body. And as the soul, first thing you have to do is tolerate all that is coming to you. So don't look at so many seniors, elders, and everything. And, oh, how am I going to fight? Just tolerate it. You have to just fight. Yuddhasva vigata jvara. That comes later, but he says you have to just tolerate. Then he goes on to tell how different modalities of yoga and how to gain knowledge, है ना, वो सब संक्षिप्त 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 में बताते हैं, in small details. Okay, so if you know, ये तो चश्मा लगेगी, मेरा चश्मा का पता नहीं. Right. So then, wait, where I have not yet come to that. ये announcement पे आया ना मैं. ये समझ सकते. मैं सोचा था I will he gives the qualities of the soul. Then कि soul के क्या ये हैं. He gives the qualities of the soul. What are the qualities of the soul? That is the next part of the second chapter of the Bhagavad Gita. That how the body, although the body is destroyed, the soul is never destroyed. The soul is eternal. Huh? Yes, yes. So, correct, correct. So uh, the concept of eternity, Sat Chit Ananda. So we are all Sat Chit Ananda. The Supreme Lord is Sat Chit Ananda, and we are also Sat Chit Ananda. Only thing is, we are experiencing all these Shitosha Dukkha and everything. Why? Because we are covered by the material nature. But actually, we are all eternal, Sat Chit Ananda. And unless we experience that Ananda with the Lord, unless we experience that divinity connection with the Lord, that Ananda concept will not come. And because we are always in search of that Divya Ananda, that is why the the soul keeps looking at petty pleasures. Actually, the soul is searching for that Divya Ananda, which comes in connection with the Supreme Lord. But वो दिव्य आनंद यूं नहीं मिलता है. तो इसीलिए जो जीवात्मा है वो छोटी छोटी चीजों में वो खुशी ढूंढने की कोशिश करता है. जस्ट लाइक अ मैन इन द डेजर्ट, ही इज thirsty. So he sees a mirage and he feels, oh, अभी पानी मिल गया, अभी पानी मिल गया. पानी मिलता नहीं. But just by looking at that mirage he feels अभी मिलेगा. लेकिन मिलता नहीं. It's only when he reaches the oasis or a water body, तब वो प्यास बुझती है. नहीं तो if he goes after mirages,
तो मिराज के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं लगेगा. Yes, it's not more than hypnotized. Okay, you can say hypnotized by Maya. That is also okay. But how does the second chapter go ahead? First, qualities of the soul. So, from this shloka, that is text 15 to text 22, 23, 24, 25, 26, all of this, all of this till 28, 29 also. All of this, uh, from 15 to 29, 30, almost 15 slokas. The Lord is just describing the different qualities of the soul, different qualities of the soul. Okay, of which, of course, the soul is so amazing. The soul is indestructible. Indestructible. वो श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है. वो मैं आपको बता देता हूँ. वैसे तो हर श्लोक इम्पोर्टेंट है. अ, या न जायते, दिस इज श्लोका क्रमांक, दिस इज टेक्स्ट नंबर 20. न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतम यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. दिस इज टेक्स्ट 20. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका. न जायते म्रियते वा कदाचिन. He is describing how you don't have to fear. He's trying to remove fear from the hearts of all of us actually. If you go to see, Arjun already knows all this knowledge. Arjun is already a pure devotee of Lord Sri Krishna. उनको ये सब ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है. इसके पहले ही अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र शरण है. How does Arjun confirm that he has full faith in Krishna in the Mahabharata? Yes. जब अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं, द्वारका जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तो कृष्ण बोलते हैं कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, और मैं निहत्ता हूं. मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ रहूंगा आपके साथ. निहत्ता. वैष्णवी अब सोचिए, युद्ध लड़ने वाले हैं, निहत्ता कृष्ण को लेके क्या फायदा है. दुर्योधन मन में सोचे, ओ माय गॉड, दिस इज सच अ वेस्ट. ये अर्जुन अभी नारायणी सेना ले जाएगा और मुझे ये ग्वाला दे के जाएगा. बट अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं. अर्जुन क्या चूज करते हैं? जिस भी प्रकार में कृष्ण है, बस कृष्ण ही चाहिए हमको. तो अर्जुन हैज फुल फेथ that wherever Krishna is, there will always be auspiciousness. है ना. तो अर्जुन को ये सब सुनाने की जरूरत नहीं है. ये भगवान कृष्ण किसको सुना रहे हैं? हमें सुना रहे हैं. हाँ, निमित्त मात्र सव्यसाचिन भव. हाँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन. कृष्ण बताते हैं, आगे के श्लोक में आते हैं, आप सिर्फ निमित्त मात्र बनो अर्जुन, बाकी सब मैं ही करने वाला हूं. तो हमको भी लाइफ में निमित्त मात्र ही बनना है. वैसे भी निमित्त मात्र ही है. जो भी चलाना है वो चला रहे हैं, वो चलाते ही रहेंगे. उनके प्लान में ढल गए तो अपना भी चलता रहेगा गाड़ी बराबर. प्रॉब्लम क्या है? हम अपना सोचते हैं, भगवान का सोचते हैं. वी मेक आवर प्लान विदाउट थिंकिंग व्हाट इज द प्लान ऑफ द लॉर्ड. Because we don't have that faith. Because we don't have that faith in the plan of the Lord. So the moment something goes against our so-called plan, we feel तब कैसे होगा.
तो क्योंकि हम भगवान का प्लान को समझते नहीं, भगवान का प्लान समझने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड माई प्लान, गुरु के शरण में। हम डायरेक्ट भगवान का शरण ले नहीं सकते। जेवण घेतलं. सो ओके, मैं कहा था, गुरु के शरण में जाने से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान का प्लान क्या है। एंड वंस वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री गुरु, तो भगवान का प्लान कैसे उभर के आएगा वो हमको भी समझ में नहीं आएगा। द क्लासिकल एग्जाम्पल of the Lord unfolding his plan is the establishing of ISKCON. When these 6 disciples of Prabhupada, they had learned about Krishna consciousness for only 6 months. 6 महीना प्रभुपाद से भगवान कृष्ण के बारे में और हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, 6 महीने, 6 महीने ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रभुपाद ने उनको बोला, जाओ लंदन में जाके मंदिर खोलो। 6 नवयुवक, 3 men and 3 women, they were married, 3 men and 3 women with 6 months training. 30 years prior to this, during British Raj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had sent 3 of his fully trained sannyasis. Fully trained sannyasis, just imagine. Fully trained sannyasis go to London and preach. They went to London. All they could do is take photographs with some lords. Came back and said, in London you can never establish Krishna consciousness. They are complete meat eaters and blasphemers. They are useless people. नराधमास, ऐसा बोल के वापस आ गए थे तीनों सन्यासी। सोचिए, 6 नवयुवक अमेरिकन भगवान कृष्ण के बारे में कितना जानेंगे 6 महीने में। Some esoteric philosophy they would know. They didn't even know the full Gita. 700 श्लोक तो गीता भी नहीं मालूम था उनको। लेकिन they had full faith in Prabhupada. Prabhupada has said, we will do it. Less than 1 year, there were Hare Krishna Dhun and Hare Krishna Kirtan happening in most of the streets of London. Why? Because the Beatles had accepted. George Harrison came down and said, I will do Kirtan with you. And when George Harrison started, the whole of London, the whole of Europe and the whole of America started chanting Hare Krishna Dhun. So how the Lord will unfold his plan is not for you to decide. For you to decide is only, how will I surrender myself unto the lotus feet of Sri Guru. And if I do that, the Lord will show his plan in such a way that I can never imagine. Because we think with our buddhi, no? हम अपने बुद्धि से सोचते हैं। अर्जुन अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कि मैं नरक में जाऊंगा, ये गलत होगा, वो गलत होगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कृष्ण बोलते हैं ऑल नॉनसेंस। कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन ऑल नॉनसेंस। अरे हम तुम क्या हैं अर्जुन के सामने। 4 बार श्लोक पढ़ेंगे तो भी याद नहीं होता है। अर्जुन को तो एक बार में खटक हो जाता था, और एक श्लोक नहीं 700 श्लोक 1 घंटे में बता दिया।
भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान 1 घंटे में दिया है. 700 श्लोकाज इन 1 hour, विच मीन्स व्हाट? 60 minutes में 700 श्लोकाज. 1 मिनट में कितना श्लोक हो गया? 10 श्लोकाज इन 1 minute. 10 श्लोकाज इन 1 minute. अरे 1 घंटे तक मैं बताऊंगा ना, तब भी नहीं जाएगा 4 श्लोक अंदर, गारंटी. ये हमारी बुद्धि है. और वहां अर्जुन की बुद्धि को भगवान बोल रहे हैं नॉनसेंस. तो हमारी क्या औकात है? बट द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज we don't have to apply so much intelligence to the here and there. Where we have to apply intelligence is how to surrender to Sri Guru. And once we apply our intelligence on surrendering to Sri Guru, rest will follow. बाकी चीजें होंगी. It will happen. You just wait and watch. You just wait and watch. So the first from shloka number 15 to 29, Krishna is just giving what? The qualities of the soul. The soul is indestructible. The soul is eternal. Even if the body dies, the soul does not die. And the soul keeps changing bodies. उसके बाद का श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, वेरी फेमस श्लोक है. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. वेरी फेमस श्लोक. जैसे हम अपने कपड़े उतारते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी नए नए शरीर धारण कर लेता है. ही जस्ट ही जस्ट रिमूव्स इट. एक कपड़ा गंदा हो गया, निकाल दो, नए पहन, खत्म. दैट इज व्हाट बॉडी इज. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. खत्म. उतना ही है शरीर. कपड़े इट्स जस्ट अ कवरिंग. द रियल पर्सन इज इनसाइड. अंदर है. उसको कुछ नहीं होने वाला है. Even after this body is gone, the soul is going to continue. The soul is going to continue. So Krishna says, when this soul is indestructible and is eternal, Satchit Ananda, why are you thinking on the terms of body? Why dharma artha kama? Why are you thinking of that? Think about the soul. Think about who is eternal. And then Krishna goes on to the next concept, and the next concept is about religion. On religion, he says, then he gives, as a Kshatriya, your duty is to fight. As a Kshatriya, even on the point of view of religion, as a Kshatriya, you have to fight. And then he gives various reasons from Shloka Kramang 30 to 30 38 30 to 38. What is Krishna telling? Krishna is telling about dharma, religion. So all of us have different religions. Look, हम भी, of course, from point of view of what do you say, क्या बोलते उसको, varna and ashrama. Varna and ashrama means what is our social duty and what is our religious duty, है ना. social pattern है वर्ण and आश्रम. अब मैं गृहस्थ हूँ. अब जिसकी शादी नहीं हुई वो ब्रह्मचारी है. एक उम्र होने के बाद घर छोड़ना है तो वानप्रस्थ. फिर आइडियली संन्यास लेना चाहिए, लेकिन कलयुग में संन्यास लेना बहुत मुश्किल है. बट ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, this is the social order. Then occupational order भी है. occupational order means क्या मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ. So in every institute there will be a Brahman class, there will be a Kshatriya class, there will be a Vaishya class, there will be a Shudra class, है ना.
All classes of men will be there in every institute. आप कोई भी इंस्टीट्यूट पकड़ लीजिए, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, क्षत्रिय क्लास. They have to do that job. Then there is a Vaishya job, Vaishya category, those who are earning the money. Then there are the advisors, जो अपना दिमाग लगा के प्लान बनाते हैं, ब्राह्मण क्लास. And then there is the working class who have to, most of the people are in the working class because you have to do this job, whatever. So that is all working class. So if you look at any institute, every institute will be divided into this three, four classes. And Krishna says what? Chaturvarnyam maya srishtyam guna karma vibhagasa. What is it? Guna karma vibhagasa. The problem is we don't look at it by guna and karma. The unfortunate thing in Indian society is that we started looking at caste system on the basis of birth. And there was complete fall down of Indian religion, dharma, whatever. Because people in India started looking at the Varna and Ashram based on birth. At the beginning of the Mahabharat war, at the beginning of the Mahabharat, how does Mahabharat start? That Bharat Maharaj, the great king, he found that his sons were not qualified enough to rule the land. So he actually adopts King Shantanu and makes him the king. King Shantanu was not his son, but he adopts him because he sees that this boy, he has the guna and karma of becoming a king. He does not give his kingdom to any of his sons. He gives it to Shantanu. That's how the Mahabharata begins. Guna karma vibhagasa. Unfortunately, that did not percolate down into the ages. And then people who are not qualified became Brahmanas. They got the Shastra in their hand and they modified the Shastra acts for their own selfish motives. Then exploitation took place. And then when the Mughals came in, people got converted to Muslim. And then when the British came in, Portuguese came in, they got converted to Christianity. Why? Because we didn't follow our Shastra properly. We didn't follow. If we had followed this, nothing would go wrong. So now it's our turn. Let's follow. Let's follow what is there in the Shastra. शास्त्र में क्या लिखा है जाने तो पहले. Let us know what is given in the Shastra. Then automatically things will fall in place. Automatically. Then I will take this later on because अभी मैं निकलता हूँ. Because this is very beautiful. The second chapter का summary जानना is so important. So very important. What did we discuss today? What did we discuss today? What are Upanishads? What are Puranas? What are their origins? What is their importance? Why did we select? Why are we selecting Gita? Why? Because Gita is song of the Lord. Upanishad spoken by the Lord Himself. Right? That is why Gita Upanishad. How many chapters in the Gita? How many shlokas in the Gita? What are the questions posed by Arjuna? How does Krishna reply? And then we came to just the first few sections of the second chapter of the Bhagavad Gita. The first section is dealing with Arjuna's questions. Then Krishna, then he comes to the point that he takes complete shelter of Lord Krishna and then Krishna starts answering. First section is, it starts by Krishna chastising Arjuna, then Krishna comes to the point that, oh Arjuna, it is all just based on whatever you are saying is based on the body.
but you're not the body, you're the soul. Dehinosman yata dehi. And so, because you are the soul, you have to tolerate. Matra sparshatu kaunteya. And then he gives all the beautiful qualities of the soul, the indestructible soul. Be as Atma. है ना? न जायते वायते mrete va kadachit. That is 15 15 shlokas are just glorifying the soul. Then after that, after glorification of the soul, then six shlokas on six nahi, 8 shlokas on what is dharma, what is dharma, right? And उसके आगे next क्लास में मेरे को याद दिलाना. This is what we ended here, so we will continue from there on second chapter revision. बाकी लोग गायब हो गए शायद, आप ही बचे. रिकॉर्डिंग ठीक. पहुंच जाएगा प्रभु. हाँ, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगा उनके पास. रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगा. आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. बोल. दंडवत प्रणाम. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. जय.